When they came for the Jews, I didn't bother. I was not a Jew. When they came for the gypsies, Romanis, I didn't bother because I was not a Romani or a gypsy. When they came for the gay men, I didn't bother because I was not gay. When they came for me, there was nobody else to look after me. Before the British came, there was no question of any discrimination against what we call transgenders. There are Hijras, Kotis, Arwanis, etc., who play different role. And till the last Mughal, Bahadur Shah Zafar, and in fact Bahadur Shah Zafar's chief executive officer was a Hijra. But after the British came, they found these men wearing saris and women's clothes. Though they may be castrated, may not be castrated, they were men who had actually taken the role of women. During the last period, there was a 50s and 60s, 1840, 50, 60, there was a resurgence in the British with right-wing Christianity and amongst the Muslims, right-wing Wahhabi kind of thinking. So they actually started becoming strained relations. So then they introduced their laws. So the most important one of them was the Indian Penal Code with 377. And the first 377, the first person who was prosecuted was a transgender person. लॉकडाउन में हम लोग को कुछ खाना नहीं मिला, कुछ नहीं, ऐसा बहुत तकलीफ चल रहा है। कपड़ा हमारे गांव में भी वैसा ही है। आज अगर रूम भाड़ा नहीं दे पाएगा, घर वाला बोलेगा से खाली करो, भाड़ा नहीं दिया, हम रोड में आ जाएंगे। पहला स्टार्टिंग में कोई नहीं दिया, मैं पहले तो मेरे पास थोड़ा थोड़ा बचा था, वही खाया। 2 बार चावल मिला, और हमको कोई पैसा पानी कुछ नहीं दिया, रूम भाड़ा भी माफ नहीं किया, लाइट बिल भी माफ नहीं किया। कुछ दिन तो हम लोग भूखा ही रहा घर में। लॉकडाऊनमध्ये तर सर्वांनाच प्रॉब्लेम झाले, पण स्पेशली ट्रान्सजेंडर कम्युनिटीला प्रॉब्लेम असे झाले की लग्न कार्य सर्व बंद होते, दुकानं बंद होती, परत स्वतः घरातली लोक आपल्या एकमेकांजवळ जाऊ शकत नव्हती, तर त्यामुळे तर सेक्स वर्क पण बंद होतं. त्यामुळे सर्वच घरी, आणि माझा समाज हा एक म्हणजे वंचित समाज आहे की ज्याला कधी लोक त्यांच्याबद्दल विचार करत नाही जास्त, किंवा ते कसे राहत असतील, काय खात असतील. पैंडेमिक आने से पहले ही उन्हें रोजगार सुविधा, आरोग्य सुविधा, शिक्षण सुविधा से वंचित रखा गया है, और कुल मिला के उन्हें अधिकारों से वंचित ही रखा गया। अभी पैंडेमिक आने के बाद में तो और दुर्दशा उनकी ज़्यादा हो गई, जैसे उन्हें राशन, मास्क, सैनिटाइज़र, फिर मेडिकल फैसिलिटीज़, फिर उनके लिए और रेंट भरना जैसे घरों का, तो ये सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा महामारी ने और ज़्यादा हमारे समाज को एकदम ज़्यादा अंधेरे में ढकेल दिया था। फिर उसके बाद लॉकडाउन, तो घर में बंद थे, तो क्या खाते, कैसे करते। 3 महीने के बाद में गाँव चले गए, गाड़ी चालू हो गया ना, ट्रेन
और गाँव में ट्रेन चालू होते उधर गए महीना की 3,000 देते उधर गाँव में इधर कोई नहीं दे मुंबई में नहीं देते इधर कुछ भी नहीं। नहीं 1 रुपये नहीं मिल रहे मेरे का आधार कार्ड इधर का है वोटर कार्ड इधर का है सब इधर का है इधर का एरिया में देते हैं ना मेरे 2 बार में राशन मिला मैं पहला 4 जन 4-5 जन इन लोग इतना पुटला देते मैं कितना दिन I'm fond of playing violin also. It's my like a hobby type. I wanted to play violin. I wanted to buy my own instrument because I believe if we have our own instrument, then we can learn, we can break it, whatever we can do. But others we need to take care. So first I decided I'll buy violin, and if money remains, I'll buy a camera. So I went to town. So towards metro, there is Furtado's company which sells imported instruments. So I had worn a sari, bindi, bangles and a chain in my neck, and I went over there. So at that moment, that person was having a violin with him, the basic violin, and I am having that much of amount with me. But that person didn't entertain me because I was a trans. हमारा तो आगे पीछे कोई नहीं मेरे जो है मैं ये लोग का गुरु और भी मेरे चेला लोग हैं हम इतना जन मिल के बहुत मुसीबत में था लॉकडाउन के अंदर सरकार पुलिस आजू बाजू वाला हमारा कोई मदद नहीं किया आपको मिला गवर्नमेंट ने आपको राशन दिया आपको कुछ मदद की तो फिर हम तो आपके भी बाद आते हैं ना फर्स्ट इज द मेल एंड फीमेल द थर्ड जेंडर कम्स द थर्ड पार्ट सो देयर वाज अ मेल फीमेल एंड आफ्टर द ट्रांस हाँ हम लोग नहीं करता मेरे और भी 4-5 जन हैं वो लोग रेड लाइट एरिया में ही काम करता है वो लोग को भी लॉकडाउन की वजह से बाहर का पब्लिक नहीं आता वो लोग को भी कुछ नहीं मिलता Transgender community has been involved in is also involved in sex work and begging and with the lockdown and everything closed they were really in dire straits and and most of the relief initially was going to groups that were like in slum communities and or maybe some organizations working with the homeless could also reach out to some homeless population. So those who were kind of organized settlers, people were reaching out to them, and the trans community in many ways, and even the sex worker community were completely neglected. The transgenders and the sex workers were really badly off. They didn't get any secure. And if for any reason a transgender is HIV positive, then they would be able to access medicines for a month or so. Earlier it was very like on a weekly basis, but because the HIV community is very strong, they were able to push with the government and get handouts for 1 month, 2 months or 3 months. I worked with the communities because they're strong, but the TB community, it was very bad. They couldn't even get their tests done. तो गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ किया है? नहीं क्या उसने नहीं ऐसा कोई हमको मदद नहीं किया या कुछ गवर्नमेंट कुछ भी हुआ? नहीं क्या नहीं कुछ भी नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला सिर्फ एंथोनी स्कूल से 2-3 बार हम लोग को चावल था राशन कार्ड नहीं है राशन कार्ड कौन देने वाले थे नहीं तो उधर किधर जाओ उधर मिलता है ऑफिस से मिलता है इधर में कोई लेके जाते हम लोग मालूम पड़ते है ऑफिस कहाँ किधर है मेरे क्या मालूम इधर का मुंबई में सामान्य लोकांसाठी रेशनवरती फ्री गहू तांदूळ मिळत होते
आमच्याकडे रेशन कार्डच नाही, आमच्याकडे ID कार्डच नाही. आम्हाला काय म्हणून तुम्ही कसे काय म्हणून रेशन तरी आम्हाला दिलं असेल? मला स्वतःला रेशन नाही मिळालं. बस हीच अपेक्षा होती की जर आम्ही पण आम्हाला पण रेशन तृतीयपंथीयांचं रेशन कार्डची खूप प्रॉब्लेम आहे. आई वडिलांना एक्सेप्ट नसतात अशी मुलं तर ती लोक नावच काढून टाकतात डायरेक्ट मेला आम्हाला म्हणून. मग आता त्यांनी तृतीयपंथीने कुठे जायचं? लड़की लोग को बुला के कहाँ से भी आता है मदद, लड़की लोग को देती है, जेंट्स लोग को देता है, लेकिन हाँ, किन्नर को सबको। जब किन्नर मांगने जाते हैं हम लोग को दो, तब बोलता है तुम लोग किन्नर के लिए नहीं है. The government had essentially focused itself on controlling the pandemic, so public health measures, and left out the entire, I mean, many of the other relief measures which typically government should be engaging in, because it affected many people at a very large scale. Government had basically abdicated its role. And so you had civil society organizations that were responding to the pandemic. ठीक है, अगर NGOs को ही करना है तो सरकार ने NGOs को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सब NGOs को बजट दीजिए, प्रोजेक्ट दीजिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कीजिए, so they will do. If you don't want to do, you are ignoring the job, so provide us. During the lockdown, during the strict lockdown when it was going on, pandemic time, we have got help from the NGO people. They helped us with the ration and they helped us with the medical kit, the safety kit, like as a mask, gloves and sanitizer. We did, I guess, almost a 10 months long COVID relief program throughout this pandemic. It started when the lockdown was there and it continued till I guess last month we were distributing ration kits. किन्नरमा ट्रस्ट ने लोगों के साथ में बहुत सारा राशन मांग कर लाए, जैसे हमें रिलायंस फाउंडेशन ने दिया, मुकेश मुद्रा जी ने राशन दिया, ताज ललित वाले ने दिया, प्रिया दत्त जी ने दिया, सुप्रिया सुले जी ने दिया, ऐसे करके हमें बहुत सारे फाउंडेशन से वगैरह राशन मिला. तो वो राशन को हमने फिर लोगों तक 20-40 हजार किन्नरों तक देने की कोशिश की 6-7 महीना. स्वतःहून तर कोणी नव्हतं आलं सुरुवातीला, पण जसे माझ्या ओळखीचे किंवा माझे जे फ्रेंड्स NGO चालवतात मी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केलं. पहिलं मला वाटलं की मी करेन की नाही, मी पोचू शकते की नाही, म्हणून मी फक्त 25 माणसांचं धान्य मागवलं. 25 माणसांचं गेल्यानंतर 50 झालं, 500, असे कमीत कमी 700-800 लोकांपर्यंत मी धान्य पोचवलं, ते पण 2-2 हफ्ते. Hijra community is also a family of choice. It's a support structure created by the community for the community. So because you identify as a trans person, you are disowned or kicked out from your biological family, and we live with a family for a social and economic and financial support. And if you are thrown out of your family, from where you will get those support and resources? This community, in this community, if you'll go to live individually as a trans person, the community won't allow you. But if you are with your guru and all, so they would take care of you. हम लोग यही सब कुछ है, यही सब. हम माँ बाप के पास नहीं जाता, हम इधर गाँव में रहता है वो, हम लोग को वो लोग के पास रहते ही मेरे माँ बाप, यही मेरा माँ बाप, हाँ, ये मेरा माँ बाप. अच्छा बुरा मेरे को वही सब देखती है. जो भी कोई भी बीमार उमार कोई भी गिरेगा हम लोग को वही लेके जाती है. अच्छा आज उसको तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल लेके गया, तो मेरा माँ बाप वो भी. If you all see any trans, or if you all see any friend of yours who's gay, who's lesbian or transgender, I would like to tell you all that please try to understand them. Please try to accept them. They are your own blood, they are your own people. मोदी जी हेल्प चाहिए हम लोग को, मोदी जी ध्यान दो.